Let's say one, say, oh mama, okay, let's say your mother, anyone's mother, and can she take a day off? Today, I don't want to be anyone's mom. I just need to be my me. I don't want to take anyone's care. I'm not responsible for anyone. I just want to be with myself. Just one day. Can she do that? Because if she does, then you take your mom for granted, right? The work does for you, the care she, like, granted you take. And but you cannot miss that duty, not a single day. Same thing happens for anyone doing any kind of job who is barely successful doing that. Not every day is same. Everyone has personal reasons. Everyone has problems. Not every day is same. Getting my point? What I'm trying to say. Even after those problems, you can just, you know, tell your brain, ki, okay, whatever thing I have, I still do it. That's the skill to learn. That will not come in a day. Even by the end of my 5th year in the architecture school, I was not able to. So me just ranting about it, telling you guys, I have learned the skill very early. I think in my first job, I have learned it the hard way, not easy. So I have to, because my profession is like something you need creativity every day, and you cannot force creativity. Creativity has to be like, has to come from within. Otherwise, you will not be able to do something not mechanical. Like you can just give an head to find a करके निकाल देंगे. नहीं हो सकता. वो कुछ नया लेना है हर दिन. And doing that every day is very tough. That's the profession. I think my point ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. Not every day is same. But it is those days ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ନିଜକୁ motivate କରିପାରିବ. Whatever the things, whatever the problem, this is the duty I cannot avoid. It's like a duty. Duty, everyone. First, it's the duty to yourself for a better life. People work hard for reasons. Find your reason. Why should I work? Why should I study? Find your reason. We are enjoying studies. Find enjoying studies, understanding things are pretty, entertaining. Understanding new things are pretty entertaining. मैं कौन सा ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଜାଣିବା ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ବୁଝେଇଦେବା ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଦ working hard part, why should one work hard? That entirely depends on the reason. भाई कौन reason ଅଛି ମୋର hard work କରିବା ପାଇଁ? What's the reason? What is that? Because hard work is the one thing. There is a quote by Jawaharlal Nehru when India got independence. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India shall awake to life and freedom. Life of a man long suppressed finds utterance. Do you understand what this means? Life of a man long suppressed finds utterance. For the first time, a man who has been suppressed for his entire life will find utterance. Those strong feelings are the reason why we got independent. Understand? Without a strong reason, there is no motivation to do anything. Today, we live in a resourceful world. Everyone has access to information. You, everyone. You don't need to come here to study. You already have the best teachers available to you at your fingertips. That's the internet. My point. But why don't we do it? Everyone knows how to do, but it's available. Information, we have access to information. People earlier thought that if someone knows how to do it, they will definitely do it. In the 1900s, that's what gave rise to the information world.
Right now, we have access to everything. We know how to do. A person who has never studied MBBS can still be a doctor just by studying. A person who has never pursued engineering can still be an engineer just by studying. Because every coursework, every type of experiments are all available on the internet. So it's very easy to succeed in this world we are living. You know why? Competition is so scarce. Everyone is distracted. जितना कितना आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि सबके ऐसे ही लगे, सब रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, सब रात रात भर सीरीज देख रहे हैं। ये सबका है। अगर तुम ये हटके थोड़ा सा भी अलग कर दोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल ना। कोई कंपटीशन ही नहीं ना, ये सब डिस्ट्रैक्टेड। मजाक नहीं कर, स्पिटिंग फैक्ट्स। कंपटीशन इतना कम है कि जहां देखो जिधर देखो वो बंदा डिस्ट्रैक्ट। अगर तुम थोड़ा सा भी फोकस ले आओ, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, विल ऑलवेज विन। Earlier, that was not the case. Earlier, people used to work a lot, didn't know where to go because information was not. Right now, everyone has information, and so much dopamine hits that nobody wants to work. Okay. If you can focus with and win, and understand that the amount of dopamine hit you will get when you win is a lot. Fine. You have reasons, Mayur. Have strong reasons to work hard. Have them. You know what are they. Those are the reasons you remind yourself of when you're feeling down. It's not a good day. You're not feeling like doing anything. Those are the days you should remind yourself about them. Otherwise, if you don't have a reason, think about it. Sit with yourself. Think, what? Why should I work hard? କାହିଁକି ଭାଇ କାମ କରିବି? କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? What is the need for me to work hard? What is the life I want? That just that you want. तू यदि खाली यह କରିଦେଲୁ कि भाई ମୁଁ after 15 years I will achieve this. Okay, this is my dream. I want to achieve it. Fine. That's a dream. That's not a goal. If you want that dream to become a goal, ତାକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗ କି ଭାଇ ଯଦି 10 ବର୍ଷରେ ମତେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, 10 years I have to achieve that, ତାହେଲେ ଏଇ 1 year ରେ ମତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଇ 1 year ଯଦି ମତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ month ରେ କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି ଏଇ month ରେ ଏହା ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିନରେ କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ଏଇ 1 hour ଭିତରେ ଏଇ ସମୟରେ ମତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? If you can break it down into steps to this day, then you will achieve it. It's a proper plan. It's a proper goal. But if you only have the dream, you know what will happen? Time will pass. You will reach the age you thought ki, okay, at that age I will achieve those things. Suddenly you will realize मुझे तो हो गया 24, अचीव नहीं किया कुछ। तो नहीं था वो जो मैं सोचा था, तो नहीं है वो मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ। I'm talking about very deep feelings. Understand what I'm trying to say? And it's not something superficial I'm saying. These are things that I've experienced myself, and these are things from my own life. Simple. At the age of 24, I wanted to achieve a lot of things. Now I am 24, I will be turning 25 this month. So there are the things that I have achieved. From a third person perspective, I may be a success to someone. But from my own perspective, I don't think I have achieved that much that I wanted to achieve. Getting my point? What is the reason? I'm sharing this because I've thought a lot about it. What's the reason? Why is that? That friend who that day distracted me, told me, let us go on a ride. Let us do that. Let us enjoy the day. I could have used the day. I looked into the reasons. If you want to be successful, you have to be very, very selfish. Understand that. To the very core, if you really want to be successful, you have to be very selfish. You get my point? What's being selfish? Because if you don't become selfish,
You cannot become selfless and help others, because if you only have something, then only you will be able to give something. Understand? This is how the world works. A person who is a beggar comes to you. If you have that 20 rupees note, now you will be able to give. How will you earn that 20 rupees note? Sometimes you had been selfish, you worked on yourself. Do not give your time to someone without any, do not waste your time. Getting my point was wasting your time. Like value, right? Time is value, right? Let's say I'm an architect. Why do I charge a fee? Because of my time. That's a service, right? If you have a product, that's a different case. Just make a product, will sell on itself. Not sell on itself. A lot of things are there, but it's different. Right now, ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଯୁଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଜବ୍ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ମିଳୁଛି ନା? What's valuable? Your time is valuable. You have to be very selfish. If you don't become selfish now, by the time you come to my age, and it's not very far, understand? Just 7 to 8 years elder than you guys. Understand that. Okay. And in 7 to 8 years, we'll go like this. Not realize it. And why I'm saying all of these things? Because you guys will understand. You guys are intelligent. You guys know things, how things work. And hard work will always beat talent each and every time. Understand that. Every time. In my life, I've experienced it so much time, so many times, lot of times, different scenarios, different events. Please understand that. It's a problem. Nahi. If you choose a lesser goal, you want to become a lesser man, find it wherever you want. I'm just saying these kind of things. I've never told this kind of things to 12th class or 10th class. I'm only telling this kind of things to you guys. Why I'm doing that? The reason why I'm doing that. Just not saying out of okay, because just I'm a teacher. No, I have been teachers to many students. Understand? Fine. Working hard is very important. In order to work hard, you need to have a reason. The stronger the reason, the more you will work. That's it. Okay then. So ionic equilibrium in solution, right? Visible into it. So first of all, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗେ ବନେ solution ରେ ionic equilibrium ଆସିବ ions ଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଯଦି ସେ ionic substance ଟା like cation ଆଉ anion ରେ ଭାଙ୍ଗିବ right cations electron ଗୋଟେ ପ୍ରକାର cell କହିଥିଲି right electrochemical କହିଥିଲି electrolytic electrolytic cell ରେ କାଥଟା ହେଲା negative ଅନଟା ହେଲା କଣ positive cation will be positive and anion will be negative because cation is that ion will get attracted towards the cathode and anion is that ion will get attracted towards the cathode. Right. So, what are electrolytes? Those substances that conduct electricity in their aqueous solution, in their aqueous states. Those substances that conduct electricity in their aqueous states are called electrolytes. It's the first basic. So, what are non-electrolytes? Who are non-electrolyte? Aqueous solution conduct electricity. କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ aqueous solution electricity conduct କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା aqueous solution ରେ ଯାଉଛି ଯଦି ସେ ions ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି cation ଆଉ anion ରେ କହୁଛି divide ହେଇଯାଉଛି they have free ions ସେତେବେଳେ ସେ conduct କରିବେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଉଛି free ions ପାଣି ଭିତରେ freely move କରିପାରୁଛନ୍ତି electricity conduct ତାହେଲେ obviously depending on କି କେତେ ions present ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଅଧିକ electricity conduct ହବ ମାନେ concentration ଉପରେ depend କରିବ କେତେ ions present ଅଛନ୍ତି aqueous solution. Number 2 भाई weak electrolyte अच्छी कि strong electrolyte अच्छी तापर depend करो अभी तो वो strong electrolyte अच्छी जिनके के example नूडो NaCl Na plus Cl minus इधर ले पानी में मिक्स है तो strong electrolyte इधर तो concentration कमे तो तार conductivity बढ़ जाए
समस्या कंसंट्रेशन कमेले कंडक्टिविटी कौन हम बढ़िबो देखो से कंसंट्रेशन कमेले कंडक्टिविटी बढ़िबो बिकॉज अधिक जगह थी ताको मूव करे पाए आंसर फ्री अधिक हबो से मूव जे बहुत NaCl मिसे देबो तारे कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो तो कंडक्टिविटी कौन हम मोलर कंडक्टिविटी कौन हम कमी जीवो मोलर कंडक्टिविटी पर मोल कंडक्टिविटी कमी जीवो मु ए कथाटा एथि कहूँ कारण तुम जान कि गोटे आइडिया थाउ कि भाई इलेक्ट्रोलाइट केते मात्रा रे प्रेजेंट अछि सॉल्यूशन रे ता ऊपर डिपेंड करियो कि केते भल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करछि न करू द्वितीय घटना हला कोन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा है जेटा कहू सेटा लिखा है देखो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट वाटर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जोटा कंप्लीटली भांगी जिवे ताको हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल दबा जदी NaCl जे पानी के जीवो Na+ मिलिबो को मिलिबो Cl- तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जेतो whereas जदी मो पाके CH3COOH अछि लेट्स से सोडियम मिथॉक्साइड एटा जले भांगिबो Na+ रे और CH3COO रे ये कंप्लीट डिसोसिएशन हेलानी इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट same the example an aqueous solution of sodium chloride is comprised entirely of sodium ions and chloride ions just example dele right while that of acetic acid okay acetic acid not sodium methoxide बदल में acetic acid नो acetic acid तो सेम कतो ना कोन CH3COOH तमन ये भांगी बोल H+ आउ CH3COO- रे fine mainly contains unionized acetic acid molecules and only some acetate ions and hydronium ions right acetate ions or hydronium ions this is because there is almost 100% ionization in case of sodium chloride 100% ionization है complete भांगी वाले and 5% ionization of acetic acid which is weak electron मात्र 5% मात्र खाली हाइड्रोजन टाइम है बाकी सब सेम थियोशन getting my point it should be noted this is page number 188 this should be noted that in weak electrolytes equilibrium is established between ions and unionized molecules माने equilibrium टा कोड achieve हो ions और unionized molecules माने electrolyte attached थिबो give rise to भांगी अछि माने भांगी की मिसी की पुनी इलेक्ट्रोलाइट बनथि अपनी इलेक्ट्रोलाइट अपने भांगी उसका आयंस या होछि बारंबार होछि एटा एंती भांगुछि पुनी एंती जोडुछि पुनी भांगुछि पुनी एंती जोडुछि continuous process रे so this type of equilibrium involving ions in a aqueous solution is called as the ionic equilibrium so what's an ionic equilibrium in which an ion any salt breaks into its ions cations and anions then cations and anions again attach themselves and makes the salt the process जो equilibrium achieve करते जो ना ions रो concentration बढ़िबो ना जो इलेक्ट्रोलाइट जो अछि तार कंसंट्रेशन देखिए तोर एग्जांपल दे भाभी दे तो बे कोन अछि NaCl अछि ना NaCl गिव राइज टू Na+ देला कोन देला Cl- देला এটা मॉलिक्यूल टा तो एडा भांगिबो Na+ देबो कोन देबो Cl- देबो पुनी Na और Cl मिसी को बने NaCl बने तो गोटे पॉइंट आसीबो जोटी इक्विलिब्रियम अछि होइछ माने जोटी NaCl जति के प्रेजेंट अछि Na+ और Cl जति स्टिकिंग रहबा चेंज हेबे बट प्रोसेस टा कंटीन्यूअस चलथियो and NaCl टा कंटीन्यूअसली Na+ और Cl- भांगुथो और Na+ और Cl- कंटीन्यूअसली जोड़ी कि NaCl बनउथो राइट ओके तो एही प्रोसेस को हम कहबा आयोनिक इक्विलिब्रियम acid bases and salt come under the category of electrolytes and may act as either strong or weak electrolytes so acid bases or salt I guess you know about those guys right okay quick revision got the what are acids those who gives us H+ ions when put inside an aqueous solution this set of जो H+ ion बाहरियो सेटा हला कोन acid जो OH- बाहरियो सेटा हला कोन base यार सबुडु फर्स्ट तो लोक माने केमि आइडेंटिफाई करतले ना हाई जोड़ा टेस्ट राइट जोड़ा सुअर लागे सेटा आ जोड़ा सॉल्टी लागे सेटा सॉल्ट आ जोड़ा पित्ता लागे सेटा बेस राइट तापरे आ गोटे प्रकार बहुत प्रकार थ्योरीज आसीबो ऑब्वियसली गोटे दिन तो सब दिन डेवलपमेंट हे थ्योरी आसला गोटे आर्हेनियस थ्योरी आसला जोड़ा कहला कि भाई तुम पकाओ पानी भीतर H+ बाहरला एसिड OH- बाहरला तो बेस मो तकले तापर पुनी आउरी गोटे बहुत थ्योरी आसी लिविस कर भी थ्योरी आसी लिविस एसिड का कहबा लिविस बेस का कहबा ताको हम एक्सप्लोर करबा मो तकले
एबे फाइन कि तमे पॉइंट कोन बुझिबो कि एसिड बेसिस और सॉल्ट जो अछि से माने इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी रे जान ए माने भी स्ट्रांग बा वीक इलेक्ट्रोलाइट हे करिवो जेंति कि NaCl कहली सॉल्ट CH3COH कहली एसिड ता यस हां देखिए स्ट्रांग फरक कोन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट माने जोटा कि कंप्लीटली भांगुछ इलेक्ट्रोलाइट माने कंप्लीटली भांगुनी एबे तू केबे केंति कंपेयर करिवु गोटे कंपाउंड को अलगा कंपाउंड संगे तो कर परिबु ना लाइट नहीं होता गोटे कंपाउंड को गोटे अलग कंपाउंड से कंपेयर कर परिबु ना कत बुझ पछ कौन माने भाबी दे गोटे रिएक्शन अछि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट सीधा तो कंप्लीटली अलग अलग रिएक्शन हो तो तू कंपेयर करके केम जानिबो कि यार इक्विलिब्रियम और ता इक्विलिब्रियम कोन सिमिलरिटीज अछि तो दैट एंटायरली डिफरेंट you will not compare those things but what you will do is instead is तो सही स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को भांगु छु अलग टेंपरेचर कोन होची टेंपरेचर बढ़ले कमले कोन होची सही इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ले कमले कोन होची प्रेशर बढ़ले कमले कोन होची तभी बचो एमती करिवो मोते क्लियर ओके नेक्स्ट घटना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स acid bases and salts find widespread occurrence in nature obviously hydrochloric acid present in gastric juices is secreted by the lining of our stomach in a significant amount obviously you know that you have HCl in your stomach why do you have that digest food because food माने बहुत बड़े फूड था जोटा कि डिसॉल्व हुए नहीं to dissolve that food we need hydrochloric acid we have hydrochloric acid in our stomach अलग बस hydrochloric acid stomach में जोड़ दिया था भाई पेट पेट we have a line right that protects our stomach from the hydrochloric acid so gastric okay and is essential for digestive processes acetic acid is known to be a main constituent of vinegar vinegar कौन है acetic acid a lemon and orange juice or citric acid and ascorbic acids understand कि all of the organic acids are weak acids all organic acids are थोड़े भी organism में मिले बाहर organic source बाहर सब तो weak acid जैसे को mineral acids सब तो strong right mineral acids are all strong even HCl H2SO4 HNO3 all are what strong next and tartaric acid is found in turmeric paste कुछ बला दोची ना थोड़ी that's also tartaric acid कौन सी tartaric acid that's from the tamarind paste as most of the acid tastes sour the word acid has been derived from a Latin word acidus meaning sour first the word means acidus which comes from the Latin word which is sour it's sour acids are known to turn blue litmus paper into red you know that using a litmus paper but a blue litmus paper नहीं acid है बुड़ेले सेटा कौन जो red issue and liberate dihydrogen on reacting with some metals you also know that a point रे मुझे टिके बढ़े भी आगु dihydrogen hydrogen molecule H2 molecule अब molecule दिखा है hydrogen atom तो dihydrogen लिखा है जो same thing तो metals माने में से acid को मिश्र कमड़े वो salt plus hydrogen gas know that acid plus metal give rise to salt plus hydrogen gas similarly bases turn to red litmus paper blue taste bitter and feel soapy fluid और hydrogen लगे bitter लगे a common example of a base is a washing soda used for washing purposes next when acids and bases are mixed in the right proportion they react with each other to give salts also know that okay some commonly known examples of salts are sodium chloride barium sulfate sodium nitrate can you give me an tell me how is sodium chloride formed which acid and which base HCl plus NaOH give rise to NaCl plus water because acid plus base give rise to salt plus water देखो कि barium sulfate H2SO4 PSO4 ना H2SO4 plus barium chloride yes sir barium oxide hydroxide metal carbonates metal hydrogen carbonate base any base oxides of metals are bases oxides of metals are basic in nature and oxides of non-metals are acidic in nature fine
Oxides of bases are basic in nature. Oxides of metals are basic in nature. Oxides of non-metals are acidic. Any base, barium sulfate होगी ना, BaSO2 is a salt. Barium hydroxide, BaOH whole 2. BaOH whole 2 will give you BaSO4 plus what? Getting my point? Sodium nitrate, nitric acid, the sodium hydroxide. Fine. Next, sodium chloride is an important component of our diet. Is formed by reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. Fine. Exist in solid state as cluster of positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions when are held together due to electrostatic interaction between oppositely charged species. Look at 6.10. Okay, understand. This is a sodium chloride crystal. Crystal माने लुणर जो आणु किणी व्हाइट कलर देखा जाउछ सेटा बेसिकली एम्प्टी सोडियम क्लोराइड जोडी गछ सोडियम टा पॉजिटिव क्लोरीन टा नेगेटिव आ सेटा केमती हेतिबो सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन दे दिथिबो क्लोरीन को दे देला पर सोडियम हेतो पॉजिटिव आ क्लोरीन हेतो नेगेटिव काइन के देथिबो ले तारो स्टेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट अचीव करिया पई ने गोटे इलेक्ट्रॉन दे दिथिबो ने प्लस हेतिबो क्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन दे हेतिबो Cl माइनस हेतिबो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हे गला पर से माने कोन करबे अट्रैक्ट करबे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक बांधी दो और से माने कोन जे जोड़ी के एकदम टाइटली पैक हे जेबो टाइटली पैक हे गेले त माने स्ट्रांग क्रिस्टल बनेबे जोटा कि हमर घटना एटा को ने कि पानी रे मिसे बुझे मिसा पानी रे मिसे कोन हबो ना पानी रे अछि कोन ना H2O रे कोन होउची ना H पटे अछि पॉजिटिव चार्ज O पटे अछि नेगेटिव चार्ज हमको सर आसला बुटू पानीटा उड कोवेलेंट बॉन्ड रे होउची पानी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर केते 6 माने माने 6 माने कोजु 2 8 6 करी 8 हेतार माने आउटर मोस्ट शेल रे 6 टा अछि बोली कोजु ओके तो 1 2 3 4 5 6 वैसे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो हाइड्रोजन संगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किछ ए बडा हबो यहाँ पे लोन पेयर अछि ना किछ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर अछि ना डीटा लोन पेयर ता माने सेथि पय का ए ऑक्सीजन पटे स्लाइट नेगेटिव चार्ज अछि हाइड्रोजन पटे स्लाइट आना गोटे पटे डायरेक्शन रे अधिक इलेक्ट्रॉन जमा हि करछन गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन आन बोली से निजाड़ के भिडुची सेटा भी गोटे केस एटा लोन पेयर पे अछि आसेबनी किताब लोन पेयर अछि सेटा पर से रिएक्ट कर सेटा बाटे अछि माने गोटे बेसिकली कोन होची ना हम यूनिट भांगी देबा एपड पॉजिटिव होची सेपड कोन होची गोटे डाइपोल क्रिएट होची पॉजिटिव नेगेटिव डॉट कोन क्रिएट होची पोल ताको हम कहूचे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तो एबे कोन हबो जो Na रो जो पॉजिटिव अछि से O आडी के से अट्रैक्ट होबा लागबो ना आउ H रो जो पॉजिटिव अछि से का अट्रैक्ट करबो Cl को अट्रैक्ट करबा लागबो तो धीरे धीरे कोन हेबे NaCl रो Na और Cl बाहर हेबा लागबो हम कहबो सर हाई वाटर को एते पावरफुल बाहर कर दो गोटे मॉलिक्यूल थोड़ी छै वाटर किछु केचे घेर दी चिंता बाहर एटा H एटा Cl ना वो की करते हाइड्रोजन के देख हाइड्रोजन घेरचन 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन घेरी लगी चल भाई तेरे को लेके जाते चींटियों का दम पता है चींटियों का दम स्मॉल ant cannot do anything but millions and millions of ants can even carry you right same thing right हेल्प करी बड़ एबे H को की धरि गयो छ ना ऑक्सीजन दे गयो तो H रो देख N रो ए देख N की लागि छ O लागि छ देख बड़टा हो ना O N को की धरि गयो छ ऑक्सीजन ने गयो छ देख ऑक्सीजन 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 ठीक है हाइड्रोजन क्या को नहीं कीजिए क्लोरीन को देख क्लोरीन को नहीं गयो छ हाइड्रोजन देख हाइड्रोजन 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 चल भाई तुझे शेयर पे लेके जाता हूं नहीं हाइड्रोजन वाले पर तो क्रिस्टल रो भांगी ए जो घटनाटा घटुची ताको ही हमें कहूचे कि जतले में पानी भीतर पकुचे NaCl को सिंपली NaCl रे भांगी दो कारण पानी रे थिबा मॉलिक्यूल्स वाटर उडा तो गोटे गोटे साइड पॉजिटिव गोटे साइड नेगेटिव तो किछटा मॉलिक्यूल जाके Na पर लागुछन किछटा मॉलिक्यूल जाके कोन कोन लागुछन त धीरे धीरे बिडी के तार को एटा भांगी जाउछ वो तो क्लियर होला एबे ये जो बाहर जे भांगी छी या चार्ज ता कोन इंटर चार्ज नेगेटिव यार इंटर चार्ज ता कोन पॉजिटिव
तो आयन्स ठाठा मिलले ना नहीं पानी भीतर एबे इलेक्ट्रिसिटी तू लगे माने पास करियो इलेक्ट्रिसिटी पास कले कोन होय चार्ज फ्लो करे माने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी किन पास करे तो एटे गोटे पॉजिटिव टर्मिनल लगा एटे गोटे नेगेटिव टर्मिनल लगा फाइन एबे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रे कोन होबा ना बैटरी भीतर कथा कहूछु आ कथा कहूछु सेल भीतर कथा कहूछु एमि अछि एबे ए इलेक्ट्रॉन एडी जीवन देखो बहुत बेसिक कथाटा कहूची बट एटा तो रियलाइज करबो टाइम लागे कोन इलेक्ट्रॉन एडी जीवन तो पूरा रास्ता है सेल भीतर है बट पॉजिटिव अछि कोन अछि नेगेटिव अछि इलेक्ट्रॉन जीवन जन से की रास्ता ही नहीं रहा आप मैं कौन कर ली तेरे को उधर जाना है ना एक काम कर मैं वायर लगा रहा हूँ उधर बल्ब लगा रहा हूँ और फिर लगा रहा हूँ तू उस तरह वो रास्ते से मतलब से रास्ता तब से जाऊँ आज कौन ना बल्ब जलू getting my point this is what is happening so basically this is the thing that is happening जो बच्चे वर्णना कौन तो एबे एठी तेले मु पास करिबो इलेक्ट्रॉन तो दरकार ना मूव करिया पे चार्ज दरकार ना तो मूव करिया पे की पॉजिटिव आडी की तो अट्रैक्ट हेबे ना सीएल ओडा और नेगेटिव आडी का अट्रैक्ट हेबे की एने इलेक्ट्रिसिटी रन करियो right so you need free ions or electrons for electricity to move movement of charge is electricity basically electricity haba mein clear la okay so eta buji palo ja lekha hai jeti mu seta hin define kar liya are held together due to electrostatic interaction between opposite charge species the electrostatic force between the two charges are inversely proportional to the dielectric constant of the medium okay eta mu kahin let's say we have a positive charge and we have a negative charge. If we join them, they are going to experience a force, positive to negative to tiny one, negative to positive to tiny one. That force will depend on what? Tell me. Physics ro katha eta simple udharan. That force will entirely depend on what? Jede bodo charge achi. Jede bodo charge d jor tiny one. Amane directly proportional to what? Q1 au Q2. ଆଉ କଣ ନା ଯଦି ସେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡାକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯିବ ତ ଧୀରେ ଟାଣିବ ଆକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଜୋରେ ଟାଣିବ ତାହେଲେ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ r1 r2 ମାନେ କଣ r ସ୍କ୍ୱାର ଏମିତି ଗ୍ରାଭିଟେସନ ବାହାରିଲେ lemon into gas same thing but now you need to give a constant to equate those terms that constant is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square now what is 1 by 4 pi epsilon naught एठी गोटे टर्म अछि 1 तो कांस्टेंट 4 तो कांस्टेंट पाई तो कांस्टेंट सब कांस्टेंट एप्सिलॉन जो अछि दिस इज कॉल्ड एज परमिटिविटी now what is permittivity तू दीटा चार्ज को नेकी पानी भीतर रखिछु काठ भीतर रखिछु स्पेस पर रखिछु कोड रखिछु मीडियम ऊपर डिपेंड करबो ना तू कोड रखिछु के जो टर्म के जो रखिछु से मीडियम ऊपर डिपेंडेंस का लगा ना परमिटिविटी but from this you understand that force is inversely proportional to permittivity that means epsilon naught is permittivity of vacuum सेटा आउ किसी भी पारे पानी भी पारे पता क्लियर होची ए जो परमिटिविटी माने कोन माने केते अलाउ करूची ए मीडियम ता तको केते अलाउ करूची कि तू जाई ता संगे लागी जाय कम अलाउ करूची अधिक अलाउ करूची यदि परमिटिविटी बहुत हाई थिबो फोर्स कम हो ओके परमिटिविटी बहुत कम थिले फोर्स अधिक सबु कम परमिटिविटी हला वैक्यूम मते क्लियर मते बुझियला तो एबे एई घटनाटा को हम एटी इंप्लीमेंट करछु फाइन एटा पूरा हमरा फर्स्ट चैप्टर 12 रे बेटा फिजिक्स ओके बट एबे पई कि एटा हम बुझ पाले कोन हला जिंसटा ओके तो वाटर अ यूनिवर्स so inversely proportional to the dielectric constant of the medium inversely proportional to the permittivity of the medium what clear okay so water a universal solvent possesses a very high dielectric constant of 80 water ra kete dielectric constant bahut high kete seta it is this permittivity एक्चुअली परमिटिविटी ता एटा फ्री स्पेस रो कल नमो बट टर्म तो कोन रिलेटिव परमिटिविटी आई डोंट वांट टू एक्सपैंड ऑन दिस बिकॉज़ इट्स अ लेंथी चैप्टर एंड आई डोंट वांट टू हमको एटा दरकार नै एटी मु जति कहि छी इट इज आल्सो लॉट तो बेसिकली
permittivity है ये भावित permittivity. Okay, dielectric constant is what? This permittivity. Actually and specifically dielectric constant not permittivity. Dielectric constant is relative permittivity. What? माने गोटे पानी रो मीडियम टा वैक्यूम ठारो केते अधिक बा केते कम. तो पानी रो मीडियम टा वैक्यूम ठारो 80 गुना अधिक. दिस मींस इज 80 माने कोन तो एटी देखछो यूनिट मिनट लिखाई छी देखाई ना 80 लिखाई छी ता माने कोन ता माने वैक्यूम ठारो 80 गुना अधिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कार पानी रो कंपेयर इट कराउ छ माने इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम संगे कंपैरिजन. ओके वैक्यूम कंपैरिजन रे एटा केते 80 गुना बहुत अधिक ता माने सेठी फोर्स सेते कम हो चार्ज भीतर फोर्स सेते की कमी जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक वाले फोर्स कोन हो कमी जो ना हमें कम बुझले संपर्कटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल छी राइट. तो 80 हे गला माने कोन बहुत कम. thus when sodium chloride is dissolved in water the electrostatic interaction reduced by a factor of 8 बुझ बछ एंग रिड्यूस कला एंड 80 गुना परमिटिविटी बढ़ी गला ताले फोर्स 80 गुना कमी जो एबे यदि सेम घटनाटा हम स्पेस रे करथन ताले करि पन थाने बिकॉज़ NaCl बहुत जोर लागि गछन बाबा राइट. इट इज बिकॉज़ हम तो पानी भीतर को नौ चे तांको भीतर फोर्स तो वीक होछ आई केते फैक्टर 80 गुना कमी जो तापर पानी रो मॉलिक्यूल ने तो छडे दे सही पानी रो मॉलिक्यूल से तो बाहर तक कहबो भाई 20 बाहर कर उडू स्पेस रे कि भाई आ कोठी छडे कर परिबे तान बहुत जोर टाइटली लागि कि अछन पानी भीतर बुडू बुडू NaCl कहि होची 80 गुना कहि होची फोर्स ता कमी होची NaCl एति पाइंगा H ऑक्सीजन ना वाटर रोड आसी कि तक अलग करी अछन मत क्लियर होला बुझियला. ओके this facilitates the ions to move freely in the solution. सेति पाइंगा ions ओडा कोन परछन freely move करि परछन solution. ई अंडरस्टैंडिंग ता बहुत इंपोर्टेंट क्या होची बोली बिकॉज़ अंडरस्टैंड कि Na और Cl आर वेरी स्ट्रांग भांगी पर नुणो को गोटा गुट्टा नुणो देबी त तो भांगी तो भांग परिबो ना इट स्ट्रांग होते पानी भीतर जाके भांगी दो पानी मॉलिक्यूल छड़ी नहीं पड़ो. This type of thinking comes to mind if you really think about it deeply. और क्लियर होला. Also they are well separated due to hydration with water molecule. वास्तविक ही गला तापर पानी आसी के धर के नहीं पड़ेला ऑक्सीजन धर देला का पॉजिटिव चार्ज को के Na को और हाइड्रोजन धर देला का नेगेटिव चार्ज को क्लोरीन क्लियर गला फाइन. Comparing the ionization of hydrochloric acid with that of acetic acid in water, we find that though both of them are polar covalent. Understand? Hydrochloric acid, how कौन? Acetic acid. तो जगह hydrochloric acid पको जो पानी दे HCl, और जगह कौन पको जो? Acetic acid, माने CH3COH पको जो. तो HCl पकेले कौन होगा ना H plus और Cl minus भांगियो. उधर भांगियो. H plus रे भांगियो Cl minus रे भांगियो. Acetic acid पकेया माने कोन CH3COH रे पकेयो H plus और CH3CO minus रे भांगियो. एटा गोटे वीक एटा कोन स्ट्रांग काहेकि स्ट्रांग कान कंप्लीट भांगी दोची एटा वीक काहेकि कान कंप्लीटली भांगो CH3CO अछि रे राइट. CH3CO को एक्सपेंड करके लिखले केम देखा जेबो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O तापर कोन H plus देखा जो एदी कथा क्लियर क्लियर. ओके अच्छा ए जो लोगोडा अछि ना माइकल फैराडे यांको विषय रे किछि कथा जो तुम जानिया दरकार. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैराडेज लॉ दिशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द पायोनियर्स कौन फैराडेज लॉ कहूँ कि भाई जदि आमे गोटे जगह काठर गोटे जगह एनोड लगे और एठी कोन करछे रखिछ सॉल्यूशन रखिछ रिजॉल्व करछे काठरटा तार सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट रे और एनोडटा तार इलेक्ट्रोलाइट रे अछि ताहले केते अमाउंट ऑफ एनोड बाहरिबो केते अमाउंट जे काठरटा जमा होबो बेसिकली गोटे पट्टा पतला होबो गोटे कोन होबो पट्टा माने गोटे मेटल भर्ती करछु गोटे मेटल सरीबो गोटे मेटल कोन होबो जमा होबो माने एक मेटल जे सेपरेट मेटल जमा होबो केते मास जाई जमा होबो एटा डिपेंड करिवो कि हम केते तादर करंट पास करछु जेति जोर हम करंट दबा ता भीतर सेति की मास जे सेपरेट कोन होबो जमा होबो एटा ला फर्स्ट लॉ फैराडेज लॉ. ओके ये भी हमें पढ़ेगा 12th इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत क्लियर होला. ओके नेक्स्ट घटना polar covalent molecules former is completely ionized into constituent ions while the latter is only partially ionized less than 5%.
HCl टा बहुत है गला और CH3COH टा मात्र 5% बट ताटू कम है. The extent to which ionization occurs depends on the strength of the bond obviously. और कोते केते भांगियो डिपेंड करियो कि बॉन्ड टा केते स्ट्रांग अछि. नंबर 1 का पर डिपेंड करियो. ए बॉन्ड जदि बहुत अधिक स्ट्रांग थिबो ताल ताकू छड़िया ପାଇଁ बहुत अधिक शक्ति दरकार. तो बॉन्ड ର strength ऊपर डिपेंड करियो नंबर 1. राइट. अब extent of the solvation of ions produced. अब से आयन सोडा जो बनू छथि से आयन सोडा पानी से केते बोल से मिसी पड़छ. पानी संगे मिक्स करिया माने कोन माने भाई पोलर थिले तो पानी संगे मिसिबे माने पॉजिटिव नेगेटिव थिले तो जेंकी H टा आसी लागिवो बा O टा सी घेरिवो पॉजिटिव नेगेटिव नथले तो से HOH लागि परिबनी. एटा फैक्टर गोटे पानी भीतर नेले तांको भीतर फोर्स टा 80 गुना कम गेला. इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी रहला केते 80 बरोबर ऑलरेडी बॉन्ड रो वीक है. ता परे त माने फर्स्ट कथा जदि बॉन्ड टा बहुत स्ट्रांग हिथिबो बहुत ही स्ट्रांग हिथिबो ताल तो 80 गुना कमिले भी से स्ट्रांग हिथि लागिवो. भांगी बन नंबर 1 फैक्टर. नंबर 2 फैक्टर जदि बा भांगी गला अरे हल्का हे गला बट पानी जाई के ताको घेरिलानी काहे पानी घेरिलानी कारण तांको भीतर चार्ज नहीं. चार्ज नथले तो घेरिबो पानी पानी घेरिबो के तलबो चार्ज पे हाइड्रोजन घेरिबो नेगेटिव थिले आ ऑक्सीजन घेरिबो पॉजिटिव थिले. तो दीटा जिंस ऊपर डिपेंड करिवो गोटे कोन ना भाई बॉन्ड टा केते स्ट्रांग अछि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस माने केते सॉल्वेशन माने केते बोल से पानी संगे मिसी पड़छ. मोर क्लियर. फाइन. नेक्स्ट व्हाट ना इट विजिबल या इट्स विजिबल. The terms dissociation and association have earlier been discussed in different meanings. Dissociation and association हम already बुझिचे but अलग अलग मीनिंग रे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट रे बुझिचे. ए कॉन्टेक्स्ट ता माने कोन dissociation refers to the process of separation of ions in water already existing as such in solid state of the solute as in sodium chloride. On the other hand, ionization corresponds to a process in which a neutral molecule splits into charged ions in the solution. Here we shall not distinguish between the two and use the terms interchangeably. Obviously, गोटे कथा बुझो dissociation रो मीनिंग अलगा अछि ionization रो मीनिंग अलगा अछि. Why they are different? Dissociation means कि completely पानी भीतर आयन टा केते बसे छड़ी. Ionization means ion रे convert Na टा Na+ सभा भी ionization. बट ए जगह रे ए कॉन्टेक्स्ट हमें आयोनाइजेशन डिसोसिएशन इंटरचेंजेबली यूज करियो. ता माने जदी गोडी जगह रे डिसोसिएशन लिखा है छि आयोनाइजेशन एका बात भांगुछ इठी आयोनाइजेशन माने भांगीबा माने पानी भीतर मिसे की भांगीबा डिसोसिएशन माने पानी भीतर मिसे की रियल मीनिंग अलग नहीं करे. बट ए कॉन्टेक्स्ट ए चैप्टर रो कॉन्टेक्स्ट हमें तो इंटरचेंजेबली यूज करियो माने निकनेम कहि परिबा. आयोनाइजेशन निकनेम कोन डिसोसिएशन डिसोसिएशन निकनेम कोन आयोनाइजेशन. मको क्लियर. Fine. Next होता ना Arrhenius just होती है ना एसिड बेसिस सॉल्ट रा बैकग्राउंड होती है ना कॉन्टेक्स्ट हम बोलते हैं Arrhenius concept of acid basic acid side एसिड. what is the Arrhenius theory? अंडरस्टैंड Arrhenius कहले भाई एसिड टा हला सेही भलिया सब्सटेंस जोटा कि पानी भीतर डिसोसिएट हे कि हाइड्रोजन आयन दबो. बेस टा हला सेही सब्सटेंस जोटा पानी भीतर डिसोसिएट हे कि OH- आयन दबो. ये H+ दबो से एसिड ये OH- आयन दबो से बेस कोथर दबो पानी भीतर दबो पानी रे मिसले H+ बाहरला एसिड पानी रे मिसले OH- बाहरला बेस. बट मन रखो नो थ्योरी यू हैव आई गेस अंडरस्टूड दैट मच. नो थ्योरी इज कंप्लीटली करेक्ट. केमिस्ट्री हो फिजिक्स रे हो सब रे फिजिक्स रे दी एक्सेप्ट obviously now let's say we are studying example let's say we are studying system of particles right now. It's not correct. No, it's not correct because there are levels of physics. There is general theory of relativity. There is special theory of relativity by Einstein. Right now, both कौन कौन दी God particle पढ़ा है. God particle. God particle means basically antimatter. God particle means जितने Big Bang हला ता पूर्वरु. My father he is actually publishing a new research paper on this. तो हमें देखे भी but it's very deep. Understand कि हमें भाई physics और superficial level रो भी superficial babies
babies are very small babies, cute babies. We are that cute babies. Fine. Okay. Basically, a lot of things to understand. Understanding space-time curvature, what is gravity? Gravity and बुझले कौन भाई है theta mass भितर force पड़ुची टाइम दूची gravity भाई नहीं. Gravity से नहीं. Gravity है ला bending of space-time to accommodate mass. अने वही तो सीधा कहते हैं तुमको but सीधा मरना. Basically, what we are studying is very baby, very babies, small babies. Okay, देखो. So ionization of an acid Hx can be represented in the following equation. Hx যদি ଅଛି তুমি ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ एसिड ର कोन ଅଛି ଗୋଟେ आयन थिबो त जे हाइड्रोजन संग लागि नोटिस कर कोन ଅଛି ଗୋଟେ आयन ଅଛି जे हाइड्रोजन संग लागि तो पानी दरे मिसले H+ बार करछि पानी दरे मिसले कोन बार करछि एक्वियस माने ही पानी दरे मिसले एक्वियस माने कोन होमोजेनियस मिक्सचर विथ होमोजेनियस सॉल्यूशन राइट सॉल्यूशन विथ वाटर solvent being the water Hx plus water give rise to H3O plus X data the same जिंस मते कहले मैं कि data का सेम काहेकी data का सेम एठी हमें प्लस फॉर्म रे देखौछ बट केबे भी गोटे जिंस प्लस फॉर्म रे एग्जिस्ट कर पानी धरे मिसि देबो सेटा H2O रे H+ लागि हेतबो सेटा कोन हेतबो H3O plus H2O plus H+ H3O plus Hx plus H2O give rise to H3O plus X minus. मिसुची तो पानी दे बट आमे सेटा को देखिलेनी कि Hx रु H टा बाहर की कुआड गला आमे खाली कहले कि Hx रु H+ टा बाहर चुबे एठी आमे डो कंसीडर करले डिडल सेम और लेखा ये हमें कंसीडर करले कि H+ टा बाहर तो पवन तो नथो ना भाई पानी भीतर अछि माने काज नहीं पानी संगे तो पानी संगे फिर H+ H2 बेसी कोन हो H3O plus okay next घटना a bare proton H+ टा गोटे कोन H+ ना होगा खाली क्यों हां पानी संगे नहीं ना सेटा तो बुझ पन पानी संगे ए जिंसटा अछि ना एटा तो हबो एटा हेई सला परे ए H+ टा ए पानी संगे मिसी के H3O plus you're not getting the point देख तू एटा को लिख पानी संगे मिसे को जदी तोर H3O plus बाहरी बन पानी संगे मिसले H+ बाहर H+ टा कोन कोठी जिवो जे H+ टा ऐड होबो ना तो सेटा सेकंड स्टेप ना फर्स्ट स्टेप थोड़ी फर्स्ट स्टेप तो H+ बाहरी बा H+ बाहरी बाटा हला फर्स्ट स्टेप एथरे खाली फर्स्ट स्टेप इलस्ट्रेट करा है छी एथरे फर्स्ट स्टेप सहित सेकंड स्टेप टा को इलस्ट्रेट करा है छी कंबाइन करा है कि Hx रो H+ बाहर जे सही H+ टा पुनी पानी संगे मिसी के H3O plus कथा बुझी परछु H+ टा कोन जवाब प्रोटॉन प्रोटॉन टा केम एग्जिस्ट करबो कोन तो H+ माने हाइड्रोजन रे गोटी इलेक्ट्रॉन अछि गोटी प्रोटॉन अछि ना नहीं तो तू तो गोटी इलेक्ट्रॉन काट देलु H+ हला H+ केतला हला गोटी इलेक्ट्रॉन देल तू काट देलु गोटी प्रोटॉन रे ता माने H+ टा गोटे प्रोटॉन ना व्हाट इज H+ प्रोटॉन अ बेयर प्रोटॉन अछि कोन प्रोटॉन टा बुझ तो पड़े प्रोटॉन टा जीव जाय लागि बता पानी देन लागि H+ is very reactive obviously proton टा कोन से कोड जीव very reactive अरे हाइड्रोजन टा तो एटॉमिक फॉर्म रे भी हमको मिलु नेचर हाइड्रोजन हमको मिलु जे मॉलिक्यूल फॉर्म रे नेचर रे प्रोटॉन टा पर एग्जिस्ट करिवो नेचर and cannot exist freely in aqueous solution thus it bonds to oxygen atom of a solvent water molecule to give trigonal pyramidal hydronium ions trigonal pyramidal I guess you understand that trigonal pyramidal is तीनटा बेस रे गोटे ऊपर लागि राइट तीनटा ट्रायंगल बेस रे गोटे ऊपर लागि H2O अछि ना OHH तो एटा थिला ना बाबा एटा को तेढे दियो इमिति इमिति आ गोटे बे लागि गला से कोडी हां ट्रायंगल पिरामिडल हला टेट्राहेड्रल माने कोन कहलु माने चारटा अछि ना छोटे केतरा अछि एते भी चारटा अछि एते पांचटा थाइ आ कोन सेंट्रल एटम रो चारि पट में सेंट्रल एटम मिसी केतरा अच्छा पूछ ना पांचटा
ठीक चारटा ही अछि हाँ माने चारटा माने एटा हला ऑक्सीजन एटा हला कोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गोटे हाइड्रोजन आसी ऊपर लागु छै ट्राइगोनल पिरामिड तन ऑक्सीजन पता लगे एटा फूड लगे हां सेंट्रल एटम ता एटा प्रोटॉन दा बेटा कोन एटा प्रोटॉन दा एटा कोन माने तू बाबू छु डाट पड़ दिन प्रोटॉन देबा तो प्रोटॉन दा कोडी जीवो भाई ऑक्सीजन बाकी नहीं लगे ऑक्सीजन बाकी नहीं लगे ऑक्सीजन ता कोडी ताको कम फोर्स फिल पर दुटा हाइड्रोजन लगे से हाइड्रोजन धक्का खाइबो छोट छोट पॉजिटिव धक्का खाइबो एमडी ऑक्सीजन आसी लगे जीवो पता क्लियर है এটা কোনটি হাইড্রোনিয়াম আয়ন কোনটি hydronium H2O plus fine in this chapter we shall use H plus and H3O plus interchangeably माने nickname author H plus jaha H3O plus there next घटना a hydrated proton हाँ hydrated पानी पिया हुआ प्रोटॉन ठीक है पानी में मिला हुआ प्रोटॉन A water molecule carrying a proton is a hydrated proton. अपने पीठ पर बिठाकर ऑक्सीजन की पीठ पर बिठाकर वो लेके जा रहा है ना ठीक है similarly a base molecule like MOH now understand what is MOH here M is metal M signifies metal understand कि metal hydroxide any metal hydroxide NaOH KOH CaOH whole 2 BaOH whole 2 getting my point any metals with hydroxide gives a base, a strong base. And understand by the name, periodic table there are alkali and alkaline earth metals. The alkali meaning of alkali is that base which is soluble in water. So from those metals, जो base टा बनिबो सेही base टा पानी द्वारा मिसिबो बोली सेही metal ओडा को alkali metals कोइ alkali कोन alkali माने इमिति गोटे base जे पानी द्वारा मिसिबो strong base. तो ये जो मेटल्स गुड़ा अछन फर्स्ट ग्रुप रे सोडियम पोटेशियम लिथियम और पड़े लगे कैल्शियम मैग्नीशियम एमन सब रहे बेरियम एमन को अल्काली और अल्कालीन अर्थ मेटल्स को जन काई को छ बिकॉज़ एमन को जो बेस हो NaOH KOH COH और एमन सब पानी धरे डिसोसिएट है मिसियन बहुत क्लियर स्ट्रांग बेस से बने तो देखो सिंपली हला MOH टा M+ और OH- का आर्हेनियस कांसेप्ट कुछ एसिड को में से H+ बाहर है बेस को में से OH- by the hydroxyl ion also exists in the hydrated form in the aqueous solution. Yes or no? तो ये OH- भी देंगे कहाँ से लगेगा? यही पानी का molecule. Arrhenius concept of acid and bases or however suffers from limitations. है कहाँ है दिख पड़े ऐसा? Only applicable in aqueous solution. पानी का solvent के बाद and does not account for basicity of substances like ammonia भाई base पता है भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं अब होगा मतलब बुझी बच्चों understand every theory has somewhat limitations or drawbacks right this is true for life रे कहा जाउथबा लोक मान को विषय जो भी ज्ञान देता है उसके ज्ञान में भी क्या है खोट है तुमको बेसिकली बहुत सारे लोगों को पढ़ना है बहुत सारे लोगों से सुनना है ताकि तुम एक अंडरस्टैंडिंग पे आ सको कि तुम्हारा ट्रूथ क्या है सुनने को तो मैंने पहले संदीप महेश्वरी को भी सुना लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो जिंदगी नहीं है वो जो बोल रहे हैं then you have to move on right I'm not saying he is a bad guy I'm just saying कि only listening to Sandeep Maheshwari is bad listen to lot of variety so that you get that which is true for you otherwise polarization पड़ा इसमें माइंड अंधभक्त होता है ना अंधभक्त अंधा विश्वास करना that will come okay next hydronium और hydroxyl ions विषय आगो शी घटना first of all तो भाई एटा प्रोटॉन टा पड़ा H+ भाई 10⁻⁻15 मिला साइज होगा तब
10⁻15 केते ओ मीटर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटम पिको फेमटो an intense electric field binds itself with a water molecule at one of the two available lone pairs on its S3O plus electric field obviously charge ta oxygen tan do tadi kon proton ta na oxygen bode negative charge achi electron tan do this species has been detected in many compounds S3O plus Cl minus in the solid state the solid state also. In aqueous solution, the hydronium ion is further hydrated to give species like H5O2 plus, H7O3 plus and H9O4 plus. भाई एक हाइड्रोजन के ऊपर एक सवारी बैठा हो प्रोटॉन का तो H3O प्लस है। वैसे ही पांच हाइड्रोजन पांच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पांच हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं उधर भी एक सवारी कर सकते। पांच हाइड्रोजन मतलब कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक बैठा एक एक वॉरियर जो रथ के ऊपर बैठ के जा रहा है तो पानी का जो रथ है वो एक रथ भी हो सकता है जिसके ऊपर एक प्रोटॉन बैठेगा। दो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर भी एक जन सवारी कर सकता है। जब दो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्रोटॉन सवारी करता है तो H5O2 माइनस है। जब तीन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एक सवारी करता है प्रोटॉन तो H7O3 प्लस है। जब नौ बोल रहा हूँ जब चार वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एक सवारी करता है तो H9O4 चार कैसे पता चला मुझे H2O ऑक्सीजन चट्टा ऑक्सीजन चट्टा ना ऑक्सीजन कितना चट्टा उधर बैठा हो बाकी हाइड्रोजन धीरे अब गोटे हाइड्रोजन ऊपर सवारी करछे प्लस हां अब गोटे आसी ऊपर बसियो। Similarly, the hydroxyl ion is hydrated to give several ionic species like H3O2 minus, H5O3 minus, H7O4 minus. Example देख लियो H9O4 रो माइनस रो HO दीटा हाइड्रोजन आ गोटे हाइड्रोजन आसी लागिला तीनटा हाइड्रोजन हला ना H3O प्लस एडा हला कोन कहलु प्रोटॉन एटा H9O4 टा गोटा एडा H9O4 माइनस ओके मन रखो हाइड्रोजन OH माइनस सब नेगेटिव रहबो OH माइनस बसले कोन हो नेगेटिव रहबो आ ए माने बसले कोन हो पॉजिटिव रहबो देख एटा हला H9O4 कोन कहली दीटा घोड़ा ऊपर गोटे सवारी करतो H2 ऊपर गोटे सवारी करछि तापर पुणी से आउट H2 ऊपर सवारी करछि तनी गोटे सवारी करछि बट एमान सब जोडी हेछन एमती कोन दी वैन der वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन देखो एटा त हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटा कोन एटा हला हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटा कोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एपटर मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन आरपट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आडी कोन अछि बॉन्ड बनिछि स्लाइड बॉन्ड एपटर हाइड्रोजन सेपटर ओ संगे बने एकोन दी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूल माने मॉलिक्यूल रो आ गोटे मॉलिक्यूल कोन कहलु बुझबनु ये H3O प्लस हला ना तो एबे एटा को एमिति भाबिन प्लेन रे देखै छि प्रकृति रे एटा स्पेस रे होछि ना ए दी टाइम में थिबे ये ऊपर लाग हां तो ये निश्चित अच्छी तो ये गोटे एटा जो देखु छु एटा स्लाइट अट्रैक्शन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग रो माने भाई पीछा चला जा रहा है वो ऐसा चेन में क्यों क्योंकि H है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ऐसा हाँ हाँ ले मैग्नेट बड़ा एग्जैक्टली फाइन और कहाँ कौन सवारी कर रहा है सबके ऊपर ये यहाँ पे H प्लस एक ही है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा बोलो एटा एटा माइनस OH माइनस आसला बा एक H2O थिला तो पके OH माइनस आसला हरी तो ये आसी अगर लोन पेयर थे वो तो ये आसी कूड लागिबो वेट लागिबो ना तो केते हला H3O2 माइनस ओके तो गोटे थ्योरी सब एक थ्योरी से तो नहीं होगा एक और थ्योरी देखेंगे ब्रोनस्टेड
lorry acids and bases. Bronsted गोटे लोग, lorry आउट लोग, ठीक है। लॉरी में कुछ सिमिलर से सुना सुना के लोग, लॉरी में कहीं पे some meme, लॉरी अरे समथिंग टू बॉलीवुड स्टार्स में, सॉरी सॉरी, और ओरी फाइट फाइट, ठीक है देखो। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस, द डैनिश केमिस्ट जोहानेस ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट, भाई ये डैनिश ये है इंग्लिश भाई, थॉमस एम लॉरी gave a more general definition of acid and bases. एंगल NH4 limitations, NH4 तो बेस है पर OH माइनस है नहीं उसमें, खाली एक्वियस सॉल्यूशन में लिमिटेड थिला सेटा, तो एटी पाई का आसला आवड़े थ्योरी ये कहले भाई एसिड वो है जो कैपेबल है एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के लिए, बात समझना, अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो एक एसिड है, क्या है, तो एसिड वो है जो क्या दे सके ना, प्रोटॉन डोनेट कर सके, प्रोटॉन डोनेट कर सके, बात समझ में आ रहा है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके वैसे, वो जनरलाइज कर दिए। अभी वहां पे हाइड्रोजन और OH माइनस का कोई बात नहीं है, मैंने सेट हाइड्रोजन OH माइनस की कथा नहीं, ये प्रोटॉन डोनेट कर परिबो एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर परिबो से बेस, हां बड़ो भागी दे क्या साइड these are substances capable of accepting a hydrogen ion, okay, तो गोटे प्रोटॉन जे एक्सेप्ट कर परिबो से के बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, Castellano Plata is very intelligent. Tournaments hire करके अराउंड भाविते सब मंथ रे 30-40,000 छात्र, ଏବେ नहीं 9th क्लास तापर पाठ पढ़िया सिखेली तो छाड़ देखा कौन हला, इन शॉर्ट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, एसिड प्रोटॉन डोनर्स, बेस प्रोटॉन, राइट, okay, consider the example of dissolution of NH3 and H2O represented by the following equation. हमें खाली कौन देखिबा कि ये प्रोटॉन दोची और के प्रोटॉन, सिंपल से कांस्टेंट लॉरी को कहूची भाई ये प्रोटॉन दे देबो एसिड, ये प्रोटॉन नहीं पाई बस ये तुम प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो क्या नहीं हो भाई, सुन नहीं रहे अच्छे से, तुम प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम क्या हो तो तुम बेस हो, प्रोटॉन जे डोनेट करियो से एसिड बा देख ओरिजिन आइडेंट तो सेम ही होगा, पानी देरे मिसले कोन बाहर थला H+ बाहर थला ताले जे कोन थला एसिड होतला, बाहरिबा माने कोन अछि तबा डोनेट करियो ताने जे प्रोटॉन डोनेट कर परियो से हला एसिड, तो जे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर परियो से हला कोन बेस, ओके, तो एट देखो NH3 अछि एबे देख ए ही घटना बेस बोले हम केमि जानि NH3 एबे देखो हला NH3 रे H2 मिसे मिसले को NH3 टा NH4 प्लस हेगला, हमें ए सब किछ देखिबनी मुके जोडा करबी सेटा नोटिस करियो, NH3 टा केते हेगला NH4 प्लस हेगला, एठी थिला 0 एठी हेगला +1, एठी थिला H2 और एठी केते थिला एठी 0 थिला एठी कोन हेगला -1, तो एठी मध्ये को प्रोटॉन एक्सेप्ट की कला और डोनेट की कला ना, ये प्रोटॉन लूज करछि ना नेगेटिव हेगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करछि ये पॉजिटिव हेगा, तो जे प्रोटॉन एक्सेप्ट करछि से हला एसिड, प्रोटॉन प्रोटॉन हाँ ठीक है, हाँ ये जगह देखियो ठीक है, ए जगह को मते प्रोटॉन एक्सेप्ट की कला, ये करछि प्रोटॉन एक्सेप्ट, तो ये कोन हेगला प्रोटॉन एक्सेप्ट कला जदी एस हमने ये कोन थिबो एटा एस थिबो, आ ये कोन करछि प्रोटॉन डोनेट करछि, ठीक है, एसिड डोनेट करि सरला परे से कोन हेगला कंजुगेट बेस, एसिड टा हुए कंजुगेट बेस, डोनेट करि सरला परे प्रोटॉन टा लूज कला परे, प्रोटॉन टा लूज कला परे से बनिबो कंजुगेट,
पता क्लियर हो कंजुगेट बेस रा टिके मीनिंग बुझि दियो बेस को बेस कौन बनाया पता क्लियर हो बेस को बेस कौन बनाया कैसे बना बेस बेस ये तो बेस है इसका कैरेक्टर कैसे निकल के आया प्रोटॉन से ये ऐड कला ना निजे धरे हाँ तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कला ऐड कला माने कोन एक्सेप्ट ना बेस मैं ये पूछो एसिड हला प्रोटॉन डोनेट करिवो बेस को प्रोटॉन एक्सेप्ट करिवो तो ये एक्सेप्टेड द प्रोटॉन it donated if it, because it donated the proton he loses the proton after losing the proton he made the base it's called conjugate base after adding accepting the proton it made the acid it became conjugate acid so a base becomes conjugate acid base becomes acid and acid becomes conjugate base after donating or accepting the proton data mistake ho acid ta acid कौन करे प्रोटॉन डोनेट करे डोनेट कर देला परे एसिड टा प्रोटॉन डोनेट कर देला परे कंजुगेट बेस बेस टा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देला परे कंजुगेट एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सेव्ड ओके ये घटना घटी गला परे एबी रिटर्न करिवान पछ काई केमति कोछ रिटर्न कला आले एबी ये कोन करिवो एसिड टा एबे ये दबो ना प्रोटॉन आ ये बे एसिड टा ये कोन करिवो होगा नहीं बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन এই জায়গায় যে বেস ଥିଲା যে এসিড ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଳେଇକି ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ରୋଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି କିଏ ବେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସି ଏସିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତ ଦେଖ ଭାବିଦେ ଇଏ ଏବେ କଣ ଥିଲା ଇଏ କଣ କଲା ପ୍ରୋଟନ ଟାକୁ ଡୋନେଟ କରିଦେଲା ये प्रोटॉन टाକୁ डोनेट करदेला ये प्रोटॉन टाକୁ एक्सेप्ट करदेला राइट प्रोटॉन एक्सेप्ट कला ये कौन कला प्रोटॉन डोनेट कला करदेला खुणु येटा बनला जैसे ना छाड़ दे ये एटा बनला H प्लस दे देला पर ये बनला OH माइनस सी H प्लस ताकू दे देला तो NH एटा NH4 प्लस हे गला एकदम सिंपल प्रेडिक्शन ये गोटे H प्लस दे ताकू हे देला जेतु ये दबो से कोन एसिड जे नबो से कोन बेस हे गला तीन दिन से मात्र रिटर्न जेतला ये दबो ना याकू तो के दबो ये दबो जे दबो से कोन जे नबो से कोन okay the basic solution is formed due to the presence of hydroxyl ions in this reaction देख तू कहबो हां ठीक है okay in this reaction water molecule acts as a proton donor and ammonia molecule acts understand this acts means the roles can change if a compound is a acid here the next step it can be a base acts not is acts नुह एसिड से एक्ट कर एसिड माने सेम जिंस आउट जगह रे बेस बळे एक्ट करते माय पॉइंट गोटे जिंस गोटे जगह रे एसिड बळे एक्ट करछ आउट जगह रे बेस बळे भी एक्ट करते कारण हम सीधा सीधा कथा कोन जानछे हमको नहीं फर्क पड़ता वो है क्या हमको फर्क पड़ता उस समय वो क्या काम करता अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिड है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यही है ब्रोस्टेड लॉ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो है क्या उस समय उस जगह पर उस रिएक्शन पे वो क्या कर रहा है एसिड एक्सेप्ट कर रहा है डोनेट कर रहा है तो एसिड है एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस चलो बढ़िया ये है स्वांते आर्हेनियस स्वांते जी क्या बोले थे स्वीडन रे जन्मायिछन्ति सालार यूनिवर्सिटी प्रेजेंट करते थे actually I will recommend you guys after
Whenever you guys are free, you watch a series, okay, called Genius. Both na? I want all of you guys to go through this series called Genius. It's a document. It's a entertaining as well as you will not get bored. It's not a document. Basically, a series, proper series on Albert Einstein. And you will meet those kind of people like Rutherford, or you will see what role they had, all the pieces you will see. Right now, what you are seeing now, you are seeing कि अच्छा ये वाला piece, ये वाला piece अच्छी, ये अच्छी, ये अच्छी. That will give you entire picture what happened. Who was Albert Einstein? What impact he made? After watching Genius, I will talk about another called Oppenheimer. I have a lot of things, but I guess that way you will understand that this is not the study. This is this thing that I've told you, na, ki the study of nature and its laws. You will really understand what is the study of nature and its laws after watching it. Fine. Hmm. Understand? Scientists, na, they are not emotional beings. Understanding my point? They are not emotional beings. They don't have friends. They have acquaintances and people they can collaborate with. Understand that very deep. That means, let's say I am developing a theory. Soham read my lists. He has some insights. And I think his insights are valuable to me. I will go meet him. I will talk to him. We'll spend 3 4 days together exploring nature. We'll come back. I'll never meet Soham again. And it's always a sprint with time. I am developing the same theory. You're developing the same theory. He's developing the same theory. She's developing the same theory. She's developing the same theory. He's developing the same theory. He's developing the same theory. He's developing the same theory. I noticed. All your life works are gone like this. We don't know each other. You are in Sweden. He is in England. I am in India. That's what life is. When Newton developed calculus, another person was developing it side by side. Now there is a controversy who should we say is the father of calculus. Because he already prepared those things. He worked for 20 years, but nobody knows when Newton got the idea. It's always time. क्या publish करो बता रहा हूँ. Publish କରିବାଟା ହିଁ ତ problem କାହିଁକି ଲୋକମାନେ? Because once you publish, तुम ऐसे पूरा भूखे पिराना पता पिरानास पिरानास घेरे हुए हैं, तुम पैर रखते ही चबाने आ जाएंगे लोग. तुम पब्लिश करके तो देखो, फिर तुम्हारे रेडिट पे सब रेडिट ऐसे आएंगे, ट्विटर पे नाम ऐसे बजेंगे, पता चलेगा तुमको क्या होता है. You have to answer everyone logically reasonable. हाँ हाँ. Yes, yes, obviously. Einstein was a clerk and he developed the special theory of relativity. No, general theory of relativity. He was a clerk. Understand? He had a background in physics, never could pursue theoretical physics in a proper research laboratory. There are complications. Obviously, everyone has a personal life and you will understand how it impacted those things. But Einstein was a clerk at that time. So, a mind blowing invention or discovery from someone who is just a clerk, not acceptable by anyone. A lot of giants, rulings, right? They will not accept कि clerk ही करना कुछ. But it was so mind bending, and he did not stop with one. Na? If he stopped with one, what thesis करके छाड़ देता था, then he would not become Einstein. विराट कोहली बहुत जन आसछन्ति भाई सेंचुरी मारी पड़े. विराट कोहली ସେଥିପାଇଁ कंटिन्यूअस सेंचुरी, कंटिन्यूअस हाफ सेंचुरी, कंटिन्यूअस इंडिया पे चढ़ाई. पता हुई वर्ष. Consistency is much more better than a single impact. Consistently deliver करेगा वो report. That Einstein did.
ये तो मला पूर्व गोटे बाहर करते थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अधा आज पेपर देखियो भाई सब दुनिया सब तक जिन को गोटे जगह कंबाइन कर आइंस्टाइन जहाँ भी प्रेडिक्शंस करते 50 और 60 इयर्स मला से प्रेडिक्शंस ठीक है ना एक्सपेरिमेंट करके देखिए मैन वाज लेजेंड बट ता पर्सनल लाइफ को तुम देखियो यू विल नेवर रेस्पेक्ट द मैन not a bad person different no one is bad understand no one is a bad person everyone has some good qualities some bad qualities and maybe social someone maybe antisocial that is the unique character about them that is why he could think that way Einstein thought the way because the way he lived because of his circumstances because of where he was born context livelihood family lot of factors okay ये clear है गला एबे the acid base pair that occurs only one proton is called a conjugate acid base pair एबे एटा हो याद है फरक कौन जी गोटे प्रोटॉन का फरक अछि ना याद रहे इसका फर्क एक प्रोटॉन का फर्क इसमें इसमें किसका फर्क एक प्रोटॉन का फर्क अगर एक प्रोटॉन के फर्क में देख रहे हो तो उनको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर इनके बीच में प्रोटॉन का फर्क प्रोटॉन हटा दो तो वो इधर आ जाएगा प्रोटॉन दे दो तो इधर दैट्स कॉल्ड अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर व्हाट इज क्लियर हां कंजुगेट एसिड बेस अच्छा तापर पुणी गोटे अछि ना कंजुगेट बेस जदी इट्स कंजुगेट बेस इज अ वीक बेस एंड वाइस वर्सा ताले सेटा ब्रॉन्स्टेड एसिड को स्ट्रांग एसिड कहबो तामने भाबी दे कि एटा एसिड बहुत अधिक होछि बट बेस एते अधिक ना रिटर्न करि करने तो ताले सेटा को स्ट्रांग एसिड टाइम बैरियर नो माने आसुन माने इक्विलिब्रियम तो होछि तरे बहुत बहुत अधिक एसिड वाला बिहेव करछि बहुत कम बेस वाला समस्त एसिड बेस एटा कहि परिबा ना एक्सेप्ट करके साइड पड़ेला करंट को रिटर्न असला यदि गोटे जिंस अधिक होउची आ जिंसटा कम होउची त सेटा स्ट्रांग हो पता क्लियर हिंदी केटा देख HCl रे पानी मिसे पानी कोन कला ना प्रोटॉन ऐड कला माने ये कोन करछि एक्सेप्ट करछि कोन करछि ये एक्सेप्ट करछि ये कोन करछि डोनेट करछि राइट तो तमे को जानि छ जे डोनेट करिवो से कोन एसिड जे एक्सेप्ट करिवो से कोन बेस बट गोथरो कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बनि गला रिटर्न आसीबा एते भलो संभव आसी परिबो देख इक्विलिब्रियम साइन अछि but तमे देखो it can be seen in the above equation that water acts as a base because it accepts the proton the species H3O plus is produced when water accepts a proton it is interesting to observe that dual role of water as an acid and a base in case of a reaction of HCl acts as a base जब देखते तो ये सामने हां तो एबे HCl पानी द्वारा मिसला कोन कम रहला कंजुगेट एसिड एटा बनेला तो एठी कोन होतबो एटा बहुत अधिक बन तापर इक्विलिब्रियम अछि इक्विलिब्रियम तीनटा केस पड़छ ना बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अछि एक्शन कंप्लीट हेड इक्विलिब्रियम अछि बाबा आधा आधा रे एटा कोन कंप्लीट हेड अछि बोली ता माने अधिक कम बनुछि एसिड बडा से बिहेव कम बेस बडा बिहेव करछि चला अच्छा ए जगह रे वाटर टा बेस बडा बिहेव करछि ए जगह रे वाटर टा का बडा बेस करछि understanding now देखो आईडी वाला क्वेश्चन है व्हाट विल द कंजुगेट स्मूथर का कहले nobody is nobody yes only in that reaction he may act as a base or may act as a acid yes इसे प्रोटॉन डोनेट करछि सही रिएक्शन मोस्टली जो माने HCl एसिड कहूचे अमोनिया बेस कहूचे व्हाई काई एमिति काई कहूचे हमें कारण अधिक तर रे सीए बहुत कम जगह रे बेस बडा बिहेव करछ ताकू बेस बडा बिहेव करिया को हेले माने ताकू दबा को हेले ताकू छी तुम जो अगर चाहते हो कि वो एक्सेप्ट कर ले एक प्रोटॉन को बहुत मुश्किल माने HCl प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले
बहुत मुश्किल है वो करना। और ये NH3 क्या करे, डोनेट कर ले प्रोटॉन, बहुत मुश्किल है करना, नहीं देता है प्रोटॉन, नहीं करता है एक्सेप्ट। बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस रे सेड़ा सेड़ा एसिड ही रोच कम डज, because in science and in nature you will understand nothing is black and white, everything is gray, right? Okay, तब देखियो सब जगह थ्योरी सेडी की लीड करे लास्ट विल फॉल इनटू अ प्लेस जोटी की बिहेव रोल र कथा गोटे जिंस केबे भी गोटे जिंस न थाए से जगह से जिंस बडा बिहेव करता इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ थ्योरीज। तो देखो ये क्लियर है गला, यहाँ पर कौन सी पेज नंबर यहाँ पर लुइस एसिड लुइस बेस तापर आयोनाइजेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ठीक कौन सी अच्छा हाँ 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 स्पेरिबली सॉल्युबल सॉल्यूट हाँ ओके सॉल्युबल डाले हमें सार दवा ये बस ये जो हम इफेक्ट कर रहे हैं ना, ये बैठ के ये ऐसे स्क्रिबल करके ये पूरा ये चैप्टर क्लियर करें, ये खत्म हो जाएगा ये भी। ऑर्गेनिक तो मैं बुक भी नहीं, मैं सीधा आऊंगा बैठाऊंगा बैठाऊंगा, यह होता है देखो करो। हाँ हाँ